are in Delhi, the capital of India, and it's the festival of Dussehra. We would want you to come along with us and explore this festival as we take you to different places throughout the day. So stay tuned. So we started the day with visiting one of our favorite haunts, District Park. The lake you see is Hauz Khas, a man-made reservoir built by the then reigning Alauddin Khilji for his ministers. Interestingly, District Park is connected to Deer Park. It can also be accessed through Safdarjung and Green Park. As the name suggests, it is an enclosure that protects a herd of deer. As we were having hunger pangs, we thought of grabbing a bite at our favorite South Indian restaurant, Naivedyam. It was not allowed to shoot in here, so we took some pictures. We had the delectable Mysore dosa, idiyappam with coconut milk, and kesari bhat. Now I am overexcited. The reason being we are heading towards West Delhi, specifically to Subhash Nagar and Ashok Nagar. In Ashok Nagar, we will be accompanied by our old friend Pratik. Pratik is going to take us to Monga Sweets. Monga Sweets is a 50-year-old establishment. By the way, which festival is complete without some delicious sweets? वैसे तो हमें इस बिजनेस को शुरू होकर 50 साल हो गए हैं, लेकिन इस जगह पे हमें मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं। पहले ये हमारी सामने होती थी ब्रांच। हमारा सबसे बेस्ट जो फेमस है वो कलाकंद है। कलाकंद हम बनाते हैं, जो कि यहाँ पे कोई नहीं बनाता उस तरीके का कलाकंद। सब लोगों के कलाकंद हार्ड होते हैं, हमारा एकदम सॉफ्ट होता है। हमारा कलाकंद बहुत फेमस है हमारे एरिया। मोंगा स्पेशल रबड़ी रसमलाई, इसके बाद रसमलाई, ये स्पंज रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन गरम हॉट गुलाब जामुन, ये काला जामुन, ये इसके ही छोटे रूप आ गए, ब्राउन रसबरी, ब्लैक रसबरी एंड वाइट रसबरी। नीचे में बंगाल स्वीट में छेना टोस्ट, खीर मोहन, मलाई चाप, कटलस, केसर क्रीम पेठा, पान गिलोरी। नीचे में पिंक कोकोनट बर्फी, मैंगो कोकोनट बर्फी, रसगुल्ला पेठा, अंगूरी पेठा, पिंक रसगुल्ला। और ये अपनी स्पेशल है शुगर फ्री बेसन बर्फी, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए। ये सेव रसगुल्ला हो गया, ये पेठा रसगुल्ला, और ये पान पेठा हो गया। In the short span that we were there, we met some old friends and relatives. After all, the biggest joy about festivities is meeting them. I met my bestie Anshita. Saurabh and Rupin took us to dinner. Ravi and his wife were as warm as always, and Ryan was in his best form. अलीपुर जू में गए ना, उसको एक केज ना खाली हो गया। न्यू एनिमल चाहिए, इसके लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं। हो गया
Dashera is celebrated in the north of India by burning the effigy of Ravan. Now, Hinduism is not linear like the Abrahamic religions. It is more of a cultural thing. There are around 300 versions of Ramayana available, with sometimes overlapping and divergent narratives. वो सभी बड़े बाहर आ जाएं, कोई इसमें होशियारी नहीं चलेगी क्योंकि ये बम जो रावण है पूरे बम्बों से भरा हुआ है। और ये भैया ये सारे खालसे के बम हैं, ये छोटे मोटे मत समझना, सबको मैं कह रहा हूँ सभी बाहर आ जाए, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, रावण को ध्यान लगा चुका है, सारे बाहर आ जाए, बिल्कुल बहादुर ना करें, बिल्कुल बहादुर ना करें, आराम से बाहर आ जाए। Ravan was a very learned man, and his 10 heads represent his knowledge and wisdom in different fields. The evil and the good are both within us, and therefore I like to see Dashera as killing of one's own inner demons rather than the killing of one particular entity. So if you liked our today's video, do subscribe to Kaleidoscope. Kaleidoscope is an infotainment channel which features both facts and entertainment. So do comment, share, like and subscribe to Kaleidoscope.